Hello, Class 4 kids. How are you all? I hope you are doing well. Today we discuss Chapter 1 Food and its Importance. Here is some warm up questions. Rank the following pictures as H high, M medium, and L low based on the requirement of energy. Here is look at your pictures, student. Here is some pictures. Children are playing kit. A man doing his work on computer. A man pull the weight. So you can write here in which work they need more energy. Okay, so you can do it by yourself. Here is, let's know about why do we need food, nutrients in food and their importance. Importance of eating a balanced diet. Food wastage should be avoided. Different method used to preserve food. Here is energy and food. Everything that is alive needs food. Food is essential for our body to maintain a healthy heart, active brain, optimally working muscles and other organs. Food provides us energy and protecting against disease. So बच्चे हमें क्या मिलता है? फूड से एनर्जी मिलती है और फूड हमें किसके लिए जरूरी है? जिंदा रहने के लिए हमें किसकी जरूरत है बच्चे? फूड की जरूरत है. Here is why we need food. We cannot survive without food as it gives energy for proper functioning of our body. Our body needs energy all the time when we are sleeping. My organs functions continuously when we are either working or relaxing. Okay. Food helps in prevention and cure of disease. So बच्चे क्या होता है? खाने से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है और हमें एनर्जी की ज़रूरत हर टाइम होती है, चाहे हम वर्क कर रहे हो या फिर हम रिलैक्स कर रहे हो. और फूड हमें किससे बचाता है बच्चे? डिजीज से भी क्या करता है? प्रिवेंट करता है. What does the food contain? Food contains substances that nourish our body and makes us strong and healthy. These substances are called nutrients. Different food items that we eat daily have different types of nutrients in different quantities. The nutrients are carbohydrate, protein, vitamin, fats, and minerals. Kinds of nutrients. Here is carbohydrate. Carbohydrate are one of the main type of nutrients. Function. Carbohydrate provide energy for the body, mainly for the brain and nervous system. We need energy for all activities we do, walking, dancing, riding, jumping, etc. Hence they are called energy giving food. So बच्चे क्या है? First one is carbohydrate. Carbohydrate किस में हेल्प करता है? आपका जो है आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में, और कार्बोहाइड्रेट आपको सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए हम इनको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, हियर इज सोर्सेज. Carbohydrates include sugar found naturally in foods such as fruits, apple, banana, and grapes, vegetable, potato, and pumpkin, milk, milk products, whole grains, breads, and cereals, wheat, maize, and rice, starchy vegetables, legumes, and refined sugar. So these are the sources of carbohydrates. You can get carbohydrate from these food items. Okay, student. Now here is fats. Function. Like carbohydrate, fat also provide energy to the body. They act as reserve of energy when carbohydrates are not available. Fats help the body to absorb certain vitamins that are fat soluble. It helps to keep the body warm by maintaining proper body temperature. Eating too much fatty food makes the body obese and cause disease. That means student, fat क्या होता है? फैट आपकी बॉडी में बच्चों एब्जॉर्ब होता है. क्या होता है कि जब कभी कभी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है तो हमें किससे एनर्जी मिलती है? जो हमारी बॉडी में फैट जो है एब्जॉर्ब होता है. ठीक है. डू यू नो इन सोवियत जॉर्जिया वेयर पीपल ईट अ लॉट ऑफ योगर्ट लिव्ड पास्ट 100 years. They eat it at almost every meal. Yogurt provides almost every nutrient that the body needs. It is especially high in calcium. बच्चे, जो सोवियत जॉर्जिया एक कंट्री है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं? दही खाते हैं. योगर्ट मीन्स होता है आपकी कर्ड, और वो लोग 100 ईयर से भी ज्यादा तक क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं. क्यों? क्योंकि जो आपकी योगर्ट दैट मीन्स दही जो होती है उसमें सभी जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? कैल्शियम. ओके, हियर इज सोर्सेस. Food rich in fats include oil, butter, nuts, coconut, ghee,
cheese, cream, etc. Energy needs of the body depend on age, gender, body size and composition. The people performing physical activity require more energy than others. दैट मीन्स बच्चा जो एनर्जी लेवल है वो हर किसी का अलग होता है और हमें एक्टिविटीज को करने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है। और जो हमें फैट है वो कहाँ से मिलता है बच्चे? ऑयल, कोकोनट, घी, दीज आर ऑल आर द सोर्सेज ऑफ फैट। हियर इज प्रोटीन्स फंक्शन। It is important for the maintenance and repair of the body. Hence, food items rich in proteins are called bodybuilding foods. Children require more protein for their growth. Protein is needed for good hair, skin, eyes, muscles and other organs of the body. So बच्चे क्या होता है, प्रोटीन हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है न्यूट्रिएंट है और प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें प्रोटीन की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। It is an important element of blood. Hemoglobin present in blood is a protein and helps in transportation of oxygen throughout the body. So क्या है बच्चे, जो हमारी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट है उसमें हेमोग्लोबिन होता है और हेमोग्लोबिन क्या है बच्चे, एक प्रोटीन है। ओके, और जो किस में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। Here is sources. Protein rich foods include meat, fish, cheese, beans, lentils, yogurt, nuts and seeds. So these are the sources of protein. Okay students, here is vitamins. Functions. Vitamin helps to form and maintain healthy teeth, bones and skin. It also helps to form red blood cells and maintain the nervous system. It helps to fight against infection and disease. Hence, food items rich in vitamins and minerals are called protective foods. So, बच्चे जो आपके विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं और आपके टीथ, बोन्स और स्किन के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। Here is, do you know? Sprouted pulses are generally good for health as they contain vitamins and minerals, but carry a risk of food-borne illness. Unlike other fresh produce, seeds and beans need warm and humid conditions to sprout and grow. These conditions are also ideal for growth of bacteria and might cause food poisoning. That means बच्चा, जो आप लोग कभी कभी देखते हैं घर में कि हम कुछ चीज़ों को भिगो के रख देते हैं और नेक्स्ट डे खाते हैं। दैट मीन्स हम उन्हें क्या करते हैं बच्चा, स्प्राउट कराते हैं। और जो हम स्प्राउट पल्सेस खाते हैं वो बहुत हेल्दी होती हैं हमारी बॉडी के लिए, बट साथ में क्या हो सकता है वो हमें हार्म भी कर सकते हैं। बिकॉज वो क्या होती है, क्या कंडीशन, जो ह्यूमिडिटी की कंडीशन होती है फॉर ग्रोइंग द स्प्राउट्स, वो कंडीशन किसके लिए हेल्पफुल होती है, फॉर ग्रोइंग द बैक्टीरिया। तो क्या हो सकता है कि वहाँ बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो सकती है और जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, हियर इज टाइप्स। A, B, C, D, E and F are the types of vitamins found in our diet. तो ये क्या है बच्चा, ये टाइप्स ऑफ विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। Here is sources. Food rich in vitamins are broccoli, papaya, almonds, sunflower oil, spinach, carrot, pumpkin, orange, beans, green leafy vegetable, etc. So these are the sources of vitamins, students. So you all know about these sources. Here is minerals. Function. The body needs many minerals such as calcium, iron, sodium, potassium and many others. We need all minerals in desired quantity to stay healthy. Our body needs calcium to maintain healthy bones and teeth. Iron is also a mineral which helps in the formation of blood. तो स्टूडेंट क्या है कि ये कुछ आपके मिनरल्स हैं, लाइक कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है। इन सब की ज़रूरत हमारी बॉडी में होती है एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी में बच्चों, ठीक है। और जो कैल्शियम है वो किसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है, आपकी बोन्स और टीथ को। वैसे ही जो आयरन है वो किस में हेल्प करता है बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में। ओके स्टूडेंट, हियर इज सोर्सेज। द टॉप 15 फूड हाईएस्ट इन मिनरल्स इंक्लूड नट्स, डार्क लीफी ग्रीन्स, beans, seeds, shellfish, fish, mushrooms, whole grains, low-fat dairy, red meat, lamb, whole grains, avocados, cheese, dried fruits, and tofu. We get calcium from milk and milk products, etc. These are the some things from which we get minerals. Okay, students, here is iron-rich food include red meats,
dried fruits and green leafy vegetables. Okay, so जो आयरन है वो हमें किससे मिलता है बच्चा? रेड मीट से, फ्रूट से और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से. Okay, here is water and fiber. Dietary fiber or ruffles is the indigestible portion of food derived from plants. तो बच्चे आपका जो डाइटरी फाइबर या फिर हम उसको रफल्स बोलते हैं वो क्या है? इनडाइजेस्टेबल पोर्शन होता है हमारे फूड का, लेकिन वो हमें किससे मिलता है? प्लांट्स से मिलता है. ओके, fiber is obtained from fruits, vegetables and the outer covering of cereals and pulses. Water and fiber help to clean the digestive system by removing waste from the body. Water helps to regulate the body temperature. तो बच्चा हमें फाइबर मिलता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और आउटर कवरिंग ऑफ सीरियल्स और पल्सेस से. सो बच्चे फाइबर और वाटर मिलके हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को क्लीन करने में, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में, और वाटर जो है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है. ओके स्टूडेंट, हियर इज बैलेंस्ड डाइट. No single food contains all the nutrients in the desired quantities. So we need to eat balanced diet for proper functioning of our body. That means बच्चा कोई भी ऐसा फूड नहीं होता जिसमें सब कुछ आपकी प्रॉपर क्वांटिटी में क्या हो? अवेलेबल हो. सो इसीलिए हमें क्या खाना चाहिए? बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट किस लिए जरूरी है? हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. अ डाइट दैट हैज प्रॉपर पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, fats, protein, vitamin, mineral and water necessary to keep good health is called balanced diet. That means वो डाइट बच्चा जिसमें आपके हर एक पार्ट जो है वो एग्जैक्टली जो है अवेलेबल हो, जितना आपकी बॉडी को चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? बैलेंस डाइट. Those who do not eat meat or fish are called vegetarian. वो लोग जो आपका फिश या फिर मीट नहीं खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? वेजिटेरियन. Those who eat meat or fish or both are called non-vegetarian. ठीक है, जो लोग मीट और फिश खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? non-vegetarian. Food that we eat either comes from plant or animals. अब जो खाना हम खाते हैं या तो वो प्लांट से आता है बच्चे या फिर एनिमल से. Vegetarian and non-vegetarian diets have their own advantages and disadvantages. बच्चा आपका खाना वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, हर एक फूड का अपनी एक एडवांटेज होती है और अपनी एक डिसएडवांटेज भी होती है. मिल्क इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट फूड एज इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट अ बॉडी नीड्स. ओके, तो मिल्क जो है उसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको बच्चे कंप्लीट फूड बोलते हैं. हियर इज जंक फूड. All types of fried and fast food lack of nutrients and damage body in different ways. They are called junk food. Samosa, pizza, pasta, noodles and cold drinks come under junk food. So बच्चे क्या होता है? जंक फूड में आपका कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और वो आपकी बॉडी को बहुत हार्म करते हैं. Here is something जो आप सबका जो है फेवरेट होता है, like pizza, pasta, but these foods are not good for our health. Why to avoid junk food? They may cause digestive problems. It lacks essential nutrients such as vitamins, proteins and minerals. बच्चे जंक फूड से आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है और उसमें कोई भी आपके विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स नहीं होते हैं. How to keep our body healthy? Here is, we should exercise regularly. We should eat healthy and balanced diet. We should drink at least 6 to 8 glass of water daily. So these are the things जो आपको डेली बच्चे करनी चाहिए जिससे आपकी बॉडी क्या होगी? हेल्दी होगी. Here is avoiding wastage of food. Take what you eat and eat all you take. That means सिर्फ आप उतना खाना लें जितना आप खा सकते हैं और उतना खाएं जितना आपने लिया है. The amount of food waste produced globally each year is more than enough to feed the nearly 1 billion hungry people in the world. That means जो all over world में food जो है waste होता है वो किसके equal है बच्चा? जो 1 billion hungry people है world में, आप उन्हें feed करा सकते हैं. even उससे कुछ ज्यादा ही food जो है waste होता है. So आपको खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए. We should take the following steps to avoid food wastage. Here is, plan out your meal and make your shopping list to determine what you actually need for the week. That means आपको एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करनी चाहिए और आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने खाने की शॉपिंग करनी चाहिए.
If you cook at home, make sure you cook keeping in mind there is no excess. That means अगर आप घर पे खाना पकाते हैं तो सिर्फ उतना ही खाना पकाएं जितना आपको जरूरत है. Okay, student? Reuse the refrigerator leftover if any for the very next meal. That means अगर आपका खाना बच जाता है तो उसको रेफ्रिजरेट करें और नेक्स्ट मील में यूज करें. Even if food gets spoiled, then compose it. If you host a family get together either at home, a marriage hall, or throw a party at a hotel, make sure you plan for the excess food to be transported to a place like an orphanage or an old age shelter. Make finishing your plate a habit. That means आपको अपनी प्लेट को फिनिश करने की एक अच्छी हैबिट डालनी चाहिए. और अगर आप ऐसी कोई पार्टी या कोई शादी या कोई गेट टुगेदर करते हैं और आपको लगता है कि खाना ज्यादा है तो आपको वो कहाँ लेकर जाना चाहिए स्टूडेंट्स? ऑर्फनेज. डू यू नो food item exposed to dust and flies may cause disease like diarrhea, typhoid, etc. So, food should be hygienically prepared, kept covered and street food should be avoided. बच्चे जो हमारा खाना होता है अगर आप उसको ऐसे खुला छोड़ देते हैं जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स और हाउस फ्लाइज जो हैं लग जाते हैं तो उससे आप बीमार हो सकते हैं, जैसे डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है. इसलिए हमें खाना बहुत साफ सुथरी जगह में बनाना चाहिए और स्ट्रीट फूड को अवॉइड करना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, हियर वी हैव चेक एंड मेट. राइट T for true and F for false statement. Food contains substances that nourish our body. Yes, it is true. Carbohydrates are one of the main type of nutrient. Yes, it is true. Fiber is obtained from meat and milk. Yes, it is also true. Junk food lack essential nutrients such as vitamin, proteins and minerals. Yes, it is also true. Answer the following questions. Give 2 examples of energy giving food. Question 2, give 2 examples of bodybuilding food, and question 3, give 2 examples of protective food. You can write these answers by yourself as we read in this chapter. Okay, here is an activity. Sort the foods in the box below into the different types. Write your answer beside each of the following. Now look at the table, student. In this table there are so many types of food. आपको क्या करना है? इन foods को बच्चा कैटेगराइज करना है, कौन सा food किस कैटेगरी में आएगा. So you can do it. Here is preservation of food. Very often some foods are not available throughout the year because of changing seasons. How will you eat mangoes in winter and carrots in summer? We all wish to enjoy fresh mangoes all round the year, but is it possible? No, we cannot relish fresh mangoes as such, but preserved mango products like pickle, chutney, juice, twist and jam can be enjoyed right round the year. That means बच्चा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम सीजनली ही खाते हैं, बट क्या होता है कि जब सीजन चला जाता है हम चाहते हैं कि हमें वो चीज खाने के लिए मिल जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन उनके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हम मैंगो का जो है अचार खाते हैं, चटनी खाते हैं. सो दीज आर द फूड आइटम्स विच बिलोंग्स टू मैंगो, और उनको हम क्या कर सकते हैं बच्चा? प्रिजर्व कर सकते हैं. Food preservation gives us many benefits such as the food lasts longer, the food is easy to store and distribute, food wastage is reduced, it adds variety to the food. So क्या होता है? फूड प्रिजर्वेशन का कुछ फायदा है, जैसे वो बहुत लंबा चलता है, हम अपने फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फूड वेस्टेज रिड्यूस हो जाता है और वेराइटी ऑफ फूड हम जो है ऐड कर सकते हैं. Here is methods of food preservation. First one is drying. Here is drying is the oldest method of food preservation. This method removes water and prevents bacterial growth which spoils the food. For example, grapes can be dried in direct sunlight and eventually get resin. Chilies are preserved by drying. So बच्चे क्या होता है? चीजों को सुखाते हैं हम किस लिए? ताकि उनमें कोई वाटर जो है ना रहे, और वाटर नहीं होगा तो बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं होगी. तो इस टाइप से भी हम फूड को प्रिजर्व करते हैं. रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. Here is refrigeration and freezing are the most popular forms of food preservation in use today. It slows down the bacterial growth as they become inactive because of very low temperature. Refrigeration and freezing are used on almost all foods, meats, fruits, vegetables, beverages, etc.
स्टूडेंट क्या होता है रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग? देखो दो मेथड होते हैं, या तो उनमें से हम पानी रिमूव कर देते हैं तो हमारा खाना तब भी क्या है खराब नहीं होता है। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग में क्या होता है, हम अपने खाने को जो है आजकल बहुत ज्यादा स्केल पे हम इसको यूज करते हैं, हम अपने फूड को फ्रीजर में जो है प्रिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत लो होता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। ओके, द नेक्स्ट वन इज कैनिंग। Canning is the process of applying heat to food then sealed in a jar in order to destroy any microorganism that can cause food spoilage. तो बच्चे कैनिंग क्या प्रोसेस होता है? कैनिंग में हम फूड को हीट करते हैं और उसके बाद एक सील्ड जार में पैक कर देते हैं। उससे क्या होता है, उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चा, डाई हो जाते हैं और इन फ्यूचर भी उसमें फूड को स्पॉइल करने वाला कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। Here is example: tomatoes, fruits, beans, canned fish or meats, corn, etc. So these are some examples जिसको हम कैनिंग की हेल्प से क्या करते हैं बच्चा, कैनिंग की हेल्प से हम लोग उनको प्रिजर्व करते हैं। Here is pickling, means preserving food in a berrine, salt solution or marinating in vinegar, acetic acid. Oil is used to preserve foods. Salt kills and inhibits growth of microorganisms. Example: mixing lime, mango and other vegetable with oil and salt. So बच्चे क्या होता है कि हम अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए डिफरेंट तरीके यूज करते हैं। जैसे आप लोग अचार खाते हैं, अचार में क्या प्रेजेंट होता है, हम उसमें नमक डालते हैं, ऑयल डालते हैं। सो नमक से क्या होता है बच्चे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। सो इस टाइप की चीजें भी हम क्या करते हैं, अपने फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं। What we read in this chapter now we will discuss in a nutshell. Here is food is very important without which we cannot survive. तो food क्या है, बहुत important है और उसके बिना हम survive नहीं कर सकते हैं। Food contains nutrients which give us energy, help to grow, fight against disease and remains healthy. Carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals are different nutrients of food. So बच्चे ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। ठीक है, वाटर एंड रफेज हेल्प टू क्लीन आवर सिस्टम। वाटर और रफेज किस में हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी सिस्टम को क्लीन करने में। अ बैलेंस्ड डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ राइट अमाउंट। वी शुड ईट a variety of food to get all the nutrients. So बच्चे बैलेंस डाइट में क्या है, सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और हमें वैरायटी ऑफ फूड, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप के फूड खाने चाहिए। किसके लिए, हमें प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे। ओके, द फूड वेस्टेज शुड बी अवॉइडेड। फूड वेस्टेज हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। देयर आर वेरियस मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। या बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे फूड को प्रिजर्व करने के। Pickling means preserving food in berrine or marinating in vinegar. Pickling क्या होता है, फूड को बेरीन में या फिर marinating vinegar में प्रिजर्व करना। Okay student, here is some keywords. First one is athletes, a sport person. Hemoglobin, a substance that gives blood its red color and transports oxygen. Refrigerated, kept in a refrigerator at a low temperature. Often is homes where orphans are taken care of. Beverages, a drink other than water. Hygienically clean, especially in order to prevent disease. Thank you students. We will meet again.